Hello students, 10 milliliter of sodium carbonate solution is titrated against 0.2 m HCl solution. जो रीडिंग्स आई हैं वो है 4.8 मिलीलीटर, 4.9 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर and 5 milliliter. Now we have to find out the concentration of sodium carbonate solution. Now sodium carbonate will react with HCl. Volume of sodium carbonate is given as 10 milliliter in the question. Molarity of HCl solution is given as 0.2 m. 3 times the reading for amount of HCl is 5 milliliters. So we will take the volume of HCl used is 5 milliliter. Now milliequivalents of sodium carbonate is equal to milliequivalents of HCl. अब milliequivalents of sodium carbonate कैसे find out करेंगे? Milliequivalents of sodium carbonate हो जाएगा molarity of sodium carbonate into volume of sodium carbonate that is 10 into वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट. वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोडियम कार्बोनेट में जो कैटायन है वो है सोडियम. नंबर ऑफ सोडियम आयंस इज 2 एंड चार्ज ऑन ईच सोडियम आयन इज +1. तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 into 1 that is 2 एंड दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl. अब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl क्या होगा? मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन दैट इज 0.2 moles per liter. This is given in the question, into volume of HCl which is 5 milliliter into valency factor of HCl. Valency factor of HCl हो जाएगी उसकी basicity के equal and basicity is equal to number of replaceable H plus ions. So number of H plus ions which HCl gives in solution is 1. So इसका valency factor हो जाएगा 1. Solving molarity of sodium carbonate solution will be equal to, this will be equal to 50 millimoles per liter. So here answer will be 50.